या आपने अपने सभी नोटपैड और पेन्स आई थिंक सब रेडी हैं आपके साथ? यस, प्लीज वीडियोस जिसके ऑन नहीं है ऑन कर लीजिए। वेलकम विजय जी। So good evening everyone once again. So let me introduce myself. I am चेतना जी ने तो कल अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। आई एम साक्षी मित्तल एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मेरा यहाँ पे एक फैशन स्टूडियो बुटीक है जम्मू में। तो आई एम रनिंग अ बुटीक हियर एंड नाउ आई एम अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड एन न्यूमरोलॉजिस्ट. I have completed all the 6 levels of astrology. SALSA method of एस्ट्रोलॉजी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है सर के साथ एंड मुझे अपना गोल्डन सर्टिफिकेट भी मिल गया हुआ है एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एस्ट्रोलॉजर आल्सो. मैं यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप से हूँ, लाइक सीनियर मोस्ट बैच की हूँ, दैट इज 2021. और सर के साथ मैंने अपना सफर 2021 में स्टार्ट किया था. मैंने उससे पहले काफी कोर्सेज किए ऑकल्ट साइंसेस में. एस्ट्रोलॉजी से पहले मैं काफी न्यूमरोलॉजी की और भी बहुत कोर्सेज मैंने ऑकल्ट साइंस में किया. बट एक टाइम पे मुझे लगा, और पता नहीं क्यों, बस मुझे लगता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर नहीं पाऊंगी, मेरे लिए बहुत टफ है, मैं समझ इतने कोर्सेज कुछ भी समझ नहीं बैठता था. तो एक दिन मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा मेन मोटिव अभी लाइफ का यही है कि थ्रू दिस सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैं लोगों की लाइफ ब्लेसिंग्स लेकर हूँ और मतलब जो उनके चैलेंजेस वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं उनको इजीली और एक अच्छी तरह से उनके प्रॉब्लम्स को सुलझा सकूं. एक मतलब ऐसा फील होता है कि लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स के साथ साथ एक पॉजिटिविटी भी आए, कि जो हम किसी और में जाती थी किसी भी पूछने के लिए, अपना चार्ट दिखाने के लिए, तो वो इतना डराते थे. बट अब लगता है कि डरने की कोई बात ही नहीं है. इतना पॉजिटिव वे से आप इतने अच्छे मेथड से, इतनी अच्छी रेमेडीज से अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ आवर सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी. So all thanks to our sir Acharya Sudhir Khollam ji. And आज मैं अगर इस काबिल बनी हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के अपनी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, सालसा की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो वो सर की वजह से ही हूँ. तो थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग. और आई नो कि आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे सर से मिलने के लिए. सो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर इंटरेस्टेड. यस, दैट्स गुड. आइए, अभी सर से तो हम मिलेंगे, उससे पहले कल आपको चेतना जी ने तो इंट्रोडक्शन दी थी हमारे सालसा मेथड के बारे में. सो लेट अस टॉक मोर अबाउट आवर सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी. सालसा, जो कि ओ दैट्स ग्रेट, इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. बस अभी थोड़ी देर में ही सर हमारे साथ जुड़ेंगे. थैंक यू. सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी. सालसा, जो कि नाम से ही पता चलता है, एस मीन सिंपल, A astronomical, L logical, S system, A an astrology. That is astronomical and logical system of astrology, which is created by Acharya Sudhir Khollam ji, that combines Vedic and Western astrology. Salsa questions traditional concepts in Vedic astrology and proposes alternate strategies. The method involves calculating a planet Salsa mood. इसमें हम planets का mood निकालते हैं, which determines the influence on a person's chart. The Salsa mood is determined by analyzing the planet's astronomical position, zodiac sign, and its relationship with the other planets. Each planet in Salsa mood indicates whether it have a positive or negative influence on a person's life. यानी कि हर एक प्लैनेट का एक अच्छा और एक बुरा प्रभाव हमारी लाइफ में होता है, जिसे हम सालसा मेथड के माध्यम से जानते हैं, और उसी को हम मूड्स ऑफ प्लैनेट में निकालते हैं कि हमें पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा इन्फ्लुएंस दे रहा है, और जो बुरा भी दे रहा है उसे हमें कैसे अपना अच्छा बनाना है. He emphasizes that astrology is not fatalistic,
हम सब में मतलब हम कह सकते हैं सर, हमें ये बिलीव करवाते हैं कि हम सब में वो ताकत है कि हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं हमारे एक्शंस के थ्रू और हमारे चॉइसेस के थ्रू, कि किस तरह से हम अपनी एक्शंस करते हैं, चॉइसेस करते हैं, बिहेवियरल चेंजेस करते हैं। तो उसके थ्रू हम अपनी जो लाइफ की, हमें इतनी ताकत है कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। आचार्य सुधीर खुल्लम believes that a person's negative chart indications can be mitigated by making positive changes in their behavior and mindset. जैसे कि एक इंसान के चार्ट में इंडिकेट करता है कि उसमें बहुत गुस्सा है, हमें पता चलता है कि हाँ भाई इस इंसान में बहुत गुस्सा है, बहुत इम्पल्सिवनेस है, सो वी कैन वर्क ऑन डेवलपिंग माइंडफुलनेस एंड पेशेंस टू काउंटरैक्ट दोज नेगेटिव टेंडेंसीज। वो सब हमारे हाथ में है कि हमें कैसे अपना बिहेवियरल चेंज करके अपने इन जो हमारे अपने हम कहते हैं भाव होते हैं उनको भी हम अपना चेंज कर सकते हैं। Acharya Sudhir Khullam's approach to astrology is holistic, which means that he considers all aspects of a person's life, including their physical health, emotional well-being, and relationships. We believe, मतलब जो वो बिलीव करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे एक वीक पॉइंट्स हैं, जो हमारे जिनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उनको हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आइडेंटिफाई करके हम अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू इनमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। वो सब हमारे हाथ में है। In summary, Acharya Sudhir Khullam's emphasis on behavioral changes as a remedy for negative chart indications reflects his behavior that astrology can be a tool for personal growth and self-improvement. By developing self-awareness, सिर्फ अपने में एक सेल्फ अवेयरनेस लाने से और अपने आप को पॉजिटिव, मतलब अपने में अपनी पॉजिटिव चेंजेस अपने बिहेवियर में लाने से, अपने माइंडसेट में पॉजिटिव चेंजेस लाने से, द इंडिविजुअल्स कैन इंप्रूव देयर लाइव्स एंड ओवरकम एनी challenges indicate in their charts. SALSA also incorporates the concept of nakshatras or lunar mentions, which are used to further refine a person's chart. The nakshatras provide insights into a person's emotional nature and inner workings. Overall, SALSA हमारा मेथड एक यूनिक और एक इनोवेटिव मेथड है, जो कि आपको पता ही चल गया होगा. It is a unique method of astrology that challenges some traditional Vedic astrology concepts and proposes alternative strategies. It provides a logical, practical approach to understanding astrology and using it as a tool for personal growth and self-improvement. एक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे सालसा मेथड के बारे में. होप करती हूँ आप हमारे सालसा मेथड को और आगे समझेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे. So how many of you, let me ask, how many of you are eager to continue to learn SALSA method of astrology with sir? Please अपनी excitement show करें. Please write on the chat box. Good. Good Mohan ji, good Jeevan ji. Shalu ji, Ravinder ji, very nice. प्रवीण जी, ग्रेट ग्रेट. आई होप हम आपको सबसे पहले, हम तो आपको कल ही वेलकम कर चुके हैं अपनी फैमिली में, एंड आई होप कि आप बस जल्दी से ही हमारे साथ जुड़ें और आगे हमारे सालसा मेथड को और बढ़ाएं, एंड यू विल रियली एंजॉय इट. आई assure that thing. So let us welcome Acharya Sudhir Khullam ji. Sir, please welcome. Hello everyone. How is everyone? Welcome everyone. Welcome to today's session. Welcome back. Welcome. So let us get immediately started. And first of all, can we give Sakshi ji a big round of applause? Very well done, Sakshi ji. Nice, nice, very nice, very nice. Excellent. You all can be there also. Sometime you all can be there and you all can become, very good trainers for Salsa method of astrology. Namaskar, namaskar everyone. Pranam everyone, welcome. And I hope you enjoyed yesterday's session. Quickly, let us revise. What all things did we do? First of all, I gave you the Google form. Have you uploaded in the Google form your Lagna chart, right? So I hope you have uploaded that so that I can start working and I can start giving you your gift. Okay. Because I will need at least, 15 minutes to type in every email.
and then send it to you, no? So it is kind of work, good amount of work, right? So, okay, so that is one. And then we learned house numbering, right? And house numbering for everyone remains the same. Correct. Very true. Right. Then we learned what are Rashis, right? And then we learned that Rashis are just a direction in the sky, nothing else. They are just the address. They are just the landmarks for the planets, right? Okay. And then we learned numbering of the Rashis, right? And then numbering of the Rashis can be different for different people, right? And you must have also observed that when you created your own chart, no? You must have observed that, right? Okay. Then we learned planets nomenclature also. How many total number of planets are there? Do you remember? How many total number of planets are? How many? Let me know. 13. Correct. Total number of planets are 13. 12 plus ascendant. Okay. 13 planets. और उसमें से physical planets कितने हैं and imaginary planets कितने हैं? How many physical planets? How many imaginary planets? Correct. 10 plus 3. Very good. Very good. Excellent. Then we also learned the names of the Rashis, and we also learned the lords of these Rashis, right? We learned that as well, and we learned that story as well. Do you remember that story? Raja Rani story. How many of you still remember that story? See, if you can remember something for 24 hours, I think you can remember that for 24 years, right? Sometimes you don't even remember what you ate yesterday, right? But then if you remember that story, right, then you can remember, right, a lot of things. Okay, so we saw that story also. And then yesterday we also saw your fingerprints, right? How many of you after the session also you were looking at your fingerprints? You were looking at all the 10 fingers. Were you doing that? Charupali was doing that. Okay. Kratiji was doing that. Okay. Excellent. Right? So Priyaji also was doing that. So we saw that. And then we saw two remedies also, two practical remedies also I gave you yesterday, no? Right? Do you remember what those remedies are? You should start applying those remedies. All right. So let us get into today's session. And today, there are two parts of today's session. One is a technical astrology, right? Wherein my Mercury and I am going to make your Mercury strong. Okay. And then we will go to a little bit of emotional astrology, where I will make your moon strong. Okay. Are you ready for this? So let us work on these two aspects of astrology. All right. So go ahead, draw a blank chart. And yes, as always, I'm going to share some stories, my life stories, and all of those things, and the fun will continue. Okay. So please go ahead, draw a chart. So how to draw a chart? We learned that yesterday. In what direction? We saw that yesterday. So draw it in an anti-clockwise fashion. Draw the diagonals. And then join the centers of the sides. All right. By the way, those who signed the assignment in time, I have responded to you also. Right? Very good. Very well done. Excellent. If you have missed one or two planets, I have pointed that out also. But very well done. Everybody has been doing very well with their assignments. Okay. Very good. Okay. Okay. Have you done? Have you drawn your chart? Drawn this chart? Blank chart? Done? Okay. Now let us work on my chart right now, so that you will also get practice. And after today's session, you can work on your own chart. Okay? And I'm going to give you a lot of assignments today also. Okay? Okay. So my chart. Which number Rashi is coming in the first house?
7 number Rashi comes in the first. And then you remember the flower, right? I hope you remember the flower. So we will go anti-clockwise way. 7, 8, 9, 10th Rashi in the 4th house, 11th Rashi in the 5th house, 12th Rashi in the 6th house, first, second, third, fourth, fifth, and sixth. All right. Okay. Okay. All right. Now, where my PL is written, where my Pluto is written, no, in front of that, there is a number that is written 9. Okay. In your charts also, if you have created your chart from Astrosage, no, there will be a number that will be written in front of your planet. Yes or no? Have you seen that number? Right? Let us try to understand what that number is. Okay. Let us understand what that number is. That number is called as degree of the planet. What is it called as? Everybody type in degree in the chat box. Okay. That number is called as the degree of the planet. Okay. In my chart, KE is written, but 25 is written in front of KE. You should copy what I am doing right now. Okay. Later on, you can work on your own chart. Right now, you just copy what I am doing. All right. Okay. Then Uranus is at 24 degrees. Saturn is at 3 degrees. Okay. Neptune is at 9 degrees. Jupiter is at 19 degrees. Moon is at 11 degrees. Mercury 13 degrees. Venus 14 degrees. Then there is Rahu also at 25. Sun at 1. And then I have Mars at 28 degrees. And then there is a degree of ascendant also, which you will get in the table. In the Astrosage table, no, you will get the degree of the ascendant. So my degree of the ascendant is 14. Okay. All right. Have you copied this? I will explain everything now, but have you copied this? Let me know. If you have copied this, type in done in the chat box. You can type in done also if you want. Okay. Anju ji, very good. Surekha ji, done. Pratyush, Sudesh, Prakali ji, Jeevan, Rupali. Done. Okay, very good. Excellent. All right. Abhi, I am going to share, 2-3 mind-blowing facts, which is there in everybody's chart. You can check your chart also. Okay. Fact number 1. Okay, ready? Fact number 1. जहां पे सन होगा ना, उसी के नजदीक मर्क्यूरी भी होगा. ज्यादा से ज्यादा एक हाउस आगे, एक हाउस पीछे या साथ में. चेक करो. For everybody's chart, wherever sun is there, Mercury will also be there only. At max, one house ahead or one house behind. Check everyone. Yes or no? In your chart also, this will be true. Mercury will be nearby the sun only. For everyone. Such a mind-blowing fact, no? Right? For every one of us. How many of you did not know this? जिन्होंने थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी की है, but you did not know this. Let me know in the chat box. Okay? ठीक है. Fact number 2. Okay? Fact number 2 is this. Mercury and Venus, they will also be very close by. At max 2 houses ahead or 2 houses behind. But not too much of a difference. 3 houses के आगे, 4 houses के आगे, आगे पीछे या फिर एकदम आमने सामने, they will never be. Check करो. So Venus will either be with Mercury or 2 houses ahead or 1 house ahead or 1 house back or 2 houses back. Check. In your chart also it will be true.
Yes or no? Interesting, no? Right? That is the reason why Mercury is called as the prince and Sun is the Raja. तो युवराज राजा के आगे पीछे ही होगा ना हमेशा. Understood? And that is why Venus is called as princess. क्यों? कभी युवराज के 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. Right? Interesting, right? Are you enjoying these facts? Right? There is third fact that you will have to check. Third fact is Ketu and Rahu. Their degrees will always be the same. The number that is written in front of Ketu and the number that is written in front of Rahu. It will always be the same. That is also an interesting thing. Right? The degree number will be the same and they will be always opposite each other. अगर राहु इधर है तो केतु उसके opposite आएगा. If Rahu is in second house, Ketu will be in 8th house. If Rahu is in 4th house, Ketu will be in the 10th house. They will always be opposite. Right? If Ketu is in 11th house, Rahu will be in the 5th house. Right? Check. This is true for everyone. Everyone. Okay? Correct. देखो परवीन जी अभी he is going into mythology. Right? Okay. चलो. Now let us draw something called as SALSA Rashi Chakra. And you know what? I will explain you the meaning of what is an astrology chart right now in some time. Okay. Let us draw Salsa Rashi Chakra. Okay. So go ahead, draw a circle. Go ahead, draw a circle. अभी देखो, जिनका Saturn strong होगा ना, they will think about drawing a circle using a circular. Huh? या फिर Mercury जिनका strong होगा ना, they will think of drawing a circle using a circle. How many of you thinking like that? Sir, circle draw करना है. Wait. Let me get my geometry box. I want to be perfect. How many of you like that? Okay. And then go ahead, draw a vertical line, draw an horizontal line on the circle. ठीक है? और center से, let the lines pass through the center of the circle. अंदाज से. You need not be absolutely perfect, but I am sure there will be some people who want to be absolutely perfect. Okay. कितने लोग हैं यहाँ पे perfection के दीवाने? Anybody? You want everything to be perfect. कौन है भाई? हैं? Oh wow! Look at all of you, huh? Saturn strong, Mercury strong. लेकिन उसी की वजह से प्रॉब्लम होता है ना कभी कभी. Right? Sometimes you don't start only because you want to be everything should be perfect. Then you don't start only. Right? Okay. ठीक है. Very good. Now let us divide these every section into three parts. ठीक है? So what we will do? ये दो lines के बीच में हम और दो lines बनाएंगे. ठीक है? So one will be here. Okay, center से जाना चाहिए वो line. And there will be one more line which will be here. It should go through the center. Done, everybody? Oops, ये क्या उठा? If you have done, just type in done in the chat.
Now you will understand another, you will understand Rashis in another very beautiful way. Okay. Go ahead and write down the numbering. So we have created how many sections on this circle here? कितने sections बना दिए हमने? How many sections have we created? Hmm. 12 sections, correct. तो हर एक सेक्शन की डिग्री कितनी होगी? If in one circle we have created 12 sections, तो हर एक सेक्शन की डिग्री कितनी होगी? 30 degrees. Very good, because 360 divided by 12 is equal to 30. ठीक है? Okay. Now you will visualize your planets like never before. Huh? Never before you must have visualized this. We are doing that. Okay. So देखो. Let us write first number here. So first Rashi is here. This is not house. Huh? This is Rashi. Okay. Because it's called a Rashi Chakra. No? So we are pointing out the Rashis. So Rashi is here. Second Rashi. Third Rashi. Go ahead. Name these in an anti-clockwise fashion. Fourth Rashi. Fifth Rashi. Sixth Rashi. Seventh Rashi. Eighth Rashi. Ninth Rashi. 10th Rashi. 11th Rashi. And 12th Rashi. Okay. Now pay attention on the screen. Say, for example, I am standing in the center of the circle. Okay. And I am looking in this direction. So towards which Rashi I am looking at? Rashi is a direction, no? So towards which number Rashi we are looking at? Correct. So my eyes are looking at the sixth Rashi. Understood? Right? If you are standing on the ground and you are looking at the sky and you are looking in this direction. Now which Rashi you are looking at? Now which direction you are looking at? Very good. क्या बात है? Now if I am standing here and then looking in this direction, then which Rashi I am looking at? I am looking at the third Rashi. Understood? Everybody understood? अभी देखो, now you are looking at the third Rashi and यहीं पे आपको ना Jupiter दिखाई दिए. So what you will say? You will say Jupiter is there in the third Rashi. Address of Jupiter is third Rashi. That is the address of Jupiter. Understood? Right? Okay. ठीक है. Now, okay, look at my chart. Alright. अच्छा, बीच बीच में ना मेरा थोड़ा सा कनेक्शन अनस्टेबल है, so please bear with me. Alright? Okay. अभी देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ, okay, and I'm looking at
Acha. Okay. Can you hear me? Right. So what happened? My network is up and down right now. So I think we will encounter such issues, thoda sa. So please bear with me, right? And Sakshi ji and Chetna ji, you can hear me? Can you say yes on the mic? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. So, तैयार हो जाओ, ठीक है? In case I log out, okay, for a long time, then you have to teach. Okay. Is that okay? Alright. चलो ये मेरा राशि चक्र बन गया. Alright. ठीक है? Simple, no? The agenda is there in the WhatsApp group. You can teach me. हाँ, साक्षी और चेतना. Okay. ठीक है. So this is the Rashi Chakra, and we were having this arrow, and okay. And we had given the numbers of the Rashis also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay? Okay. Now say I am standing in the center again, and I am looking exactly in this direction. Yahan pe. Now which Rashi I am looking at? Can you put it in the chat box? Now which Rashi am I looking at? 1/12, Ravindraji. Very good. Excellent. Shaluji also same. Jivanji is saying 1. So to be precise, I am looking at first Rashi at 0 degrees. Understood? अभी एक नंबर राशि की कितनी डिग्री होगी? ये 0 है. This will be 30 degrees in the first Rashi. Everybody understands? Because every section is 30 degrees, no? Now this is also 0 degree of the second Rashi. 30 degree of the first Rashi is equal to 0 degree of the second Rashi. Is everybody understanding this? Right? Acha. Now tell me where I am looking. Now tell me where I am looking. Tell me degrees. Tell me degrees. 30 degrees in which Rashi? You have to tell me. I am looking at 30 degrees, correct. But in which Rashi? Correct, Jivanji. Jivanji understood it. Surekhaji also understood it. Right? Many of you understood it. Very good. So I am looking at 30 degree of second Rashi, which is also equal to 0 degree of which Rashi? Third Rashi. Kya baat hai? Excellent. Very nice. Acha, now tell me where I am looking now. Okay, hold on. Huh? Okay. Tell me where I am looking now. Chandramohanji, you need not do cumulative calculation. Huh? Do section to section calculation. Correct. So we are looking at 30 degree of 8th Rashi or 0 degree of 9th Rashi. Right? Now I start turning my direction and I am looking here. Center of the 9th Rashi. Now where I am looking? How much degree in 9th Rashi? Wow, very good. I'm looking at 15 degrees in the 9th Rashi. क्या बात है? So beautifully intelligent all of you are. मैंने कहा था ना मर्क्यूरी को आपके स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं. Right? Okay. Now tell me, if this is 15 degrees of 10th Rashi, तो ये कितना होगा?
अंदाज से ये कितना होगा 22। वेरी गुड अंजू जी, एक्सेलेंट। 25, 22 अंदाज इज ओके। ओके, अंदाज से इट इज ओके। वेरी गुड, 20 degrees. Wonderful. Give yourself a big round of applause. Excellent. And you know what? Pat yourself in the back, on your, shoulder. Pat yourself on your shoulder. Type in IGA in the chat box. Right? खुद को बोलना, वाह बेटा वाह. Right? क्या बात है. Right? Very good. Very well done. Okay. Now I hope you have my chart in front of you. Do you have my chart in front of you, which we did in the previous screen? Did you copy that chart? Yes? Shalu ji has it. Anju ji has it. Okay. अभी हम क्या करेंगे मालूम है? मेरे लाइफ का जो चार्ट है हम इस राशि चक्र पे मार्क करेंगे. राइट? माय चार्ट, my birth time planet position we will mark on this Rashi Chakra so that you are absolutely clear about everything about degrees. All right, let us go ahead. Tell me one thing. Sun, my sun is in which Rashi and how many degrees? Rashi, huh? Not house. I am asking you, my sun is in which Rashi and how many degrees? Correct, Rupali ji, Anju ji, Shalu ji, very good. First Rashi. And how many degrees is my sun at? 1 degree. Right? Okay. So let us mark the sun. First Rashi. सबसे पहले तो first राशि पे चले जाओ. Right? और ये first राशि का हो गया 0 degrees. थोड़ा सा आगे करेंगे तो आ गया 1 degree. Yes or no? So this is where my sun was during my birth time. Birth date and time. This is where my sun was. Is everybody understanding this? Yes? If your videos are on, बस मुंडी हिला देना ऐसा yes करके. So I will understand. Thank you, Ravindra ji. Right? Thank you, everyone. Aisha ji, thank you. Right? Okay, Vidushi ji, very good. ठीक है. Okay. ठीक है. Next. After sun, let us look at my moon. मेरा मून कौन सी राशि में है, कितने डिग्री में है देखो तो. 11th राशि में है. करेक्ट. एंड 11 डिग्री में है. Excellent. 11th राशि 11 degree. So where will I mark my moon? 11th राशि 11 degrees. So ये 11th राशि है, उसका सेंटर 15 डिग्री. So थोड़ा सा towards 0 I will come. 14, 13, 12, 11. चलो done. So this is the position of my moon. Enjoying everybody understanding now what are degrees. Right? Yes, no. This is how simple degrees are, okay? And that is why Rashi is what are Rashi is just a direction in the sky so that we know the address of the planet. Okay? Okay. After moon, let us go to Mercury. मेरा Mercury कौन सी राशि में है, कौन से डिग्री में है, बताओ तो. Very good. 12th राशि 13 degrees. क्या बात है. देखो इन लोगों को 2 दिन पहले कुछ नहीं मालूम था. राइट? आज देखो. ओके, ठीक है. सो 12th राशि 13 डिग्रीज. तो ये देखो ये सेंटर आ गया 12th राशि का, थोड़ा सा उसके पहले 13 डिग्रीज यहाँ पे आ गया. चलो अंदाज इज ओके. सो दिस इज मर्क्यूरी. वीनस कहाँ पे है? वेयर इज माय वीनस? सेम राशि 12th राशि इन 14 डिग्रीज. मतलब क्या होगा? वीनस और मर्क्यूरी क्या होगा? जस्ट बाजू बाजू में यहाँ पे आ गया वीनस. एक दूसरे की गोदी में बैठ गए. ठीक है, प्रिंस और प्रिंसेस. अंडरस्टूड? इन माय केस, राइट, दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, वेरी क्लोज.
ठीक है, okay. Then Mars, where is my Mars? Tell me. And how many degrees? Tell me the address of Mars, entire address of Mars. Entire address is first Rashi, 28 degrees. Correct? In the 7th house. Correct. First Rashi, 28 degrees. All right. So Mars. So abhi I am going to mark. You tell me whether it is correct or wrong. Okay. First Rashi, 28 degrees. Is this correct? If your video is on, then ऐसे मुंडी हिला देना. नहीं, not correct. Okay. Okay, now let me try to correct myself. हाँ, देखता हूँ मुझे थोड़ा आता है कि नहीं. 28 degrees. Do you think this is correct? Yes? अभी ऐसे मुंडी हिला देना. Okay, very good. See, you are all genius astrologers. कैसे समझ रहे हो अभी planet position समझ रहे हो? Are you understanding that? Right? Such a big thing you are understanding. Okay. राहु, sorry, Mars हो गया. Mars के बाद Jupiter. Tell me where my Jupiter is. फटाफट. Where is my Jupiter? Which Rashi? How many degrees? Correct. 10th Rashi, 19 degrees. Right? So, ये 10th Rashi इसका center आ गया 15 डिग्री. Right? तो 19 डिग्री ये तरफ आएगा ना, this side, no? No, no. The other side. Correct. Right? So, 15 degrees तो उसके यहाँ से, यहाँ पे, चलो यहाँ पे आ गए Jupiter. Alright? My Jupiter. Then Saturn, tell me where my Saturn is. Where is my Saturn? Which Rashi, how many degrees? 8th Rashi, 3 degrees. Correct. 8th Rashi, 3 degrees. Right? Okay. So is this a good position of Saturn? Correct? Right. Okay. 8th Rashi, 3 degrees. And then Uranus. Where is my Uranus? 8th Rashi, 24 degrees. So in the same Rashi, I have to mark 24 degrees, right? This is where my Uranus is. So 15, इसका half 22.5, उसके आगे थोड़ा सा. So Uranus, this is Uranus. And then Neptune, 9th Rashi, 9 degrees. Anjuji is super fast. Many of you are super fast right now. So ये 15 डिग्री आ गया, उसके पहले ये 7.5 हो गया, तो उसके थोड़ा आगे. So Neptune यहाँ पे आ गया. Right? Pluto. Tell me where my Pluto is. 7th Rashi, 9 degrees. That is where my Pluto is. 7th Rashi. तो ये 15 डिग्री का सेंटर आ गया, ये 7.5 हो गया, उसके थोड़ा सा आगे. तो यहाँ पे प्लूटो आ गया. Right? Okay. Rahu. Tell me where my Rahu is. First Rashi. How many degrees? Correct. 25 degrees. First Rashi, 25 degrees. That is where Rahu is. First Rashi. ये सेंटर आ गया 15 डिग्री का, उसके तो आगे मार्स 28 था, तो मार्स के आगे आएगा कि मार्स के पीछे आएगा? आगे या पीछे? व्हाट डू यू थिंक? ये आगे वाला पोजीशन है और ये पीछे वाला पोजीशन है. विच साइड? मार्स के आगे या पीछे? पीछे. करेक्ट. क्या बात है. Amazing, no? See how beautifully intelligent all of you are. Super intelligent, you people. So that is Rahu. And then where is Ketu? 7th Rashi, 25. जहां पे राहु है उसका exact opposite will be Ketu.
ठीक है, 7th राशि 25 degrees. This is Ketu. And my ascendant, where is my ascendant? Which Rashi, how many degrees? My ascendant, 7th Rashi, 14 degrees, right? Okay. So my ascendant is 7th Rashi, 14 degrees. Okay. So where is my ascendant? Here will be my ascendant. ये 7th राशि का सेंटर आ गया, थोड़ा सा उसके पीछे. So I will write it here. Ascendant. All right. Then have you understood this? Did you enjoy this concept? Type in IGA in the chat box. Right? एकदम दिल से, दिल खोल के, एकदम मन से type in IGA. Right? तो ये जो चार्ट बना है, this chart, what is this chart? This is the planet position when I was born. At that moment. Understood? This is the planet position when I was born. At that moment, at that place. Understood? Right? Okay. Now let me try to explain you what is an astrology chart if you have understood this. Okay. Have you seen the movie Three Idiots? Amir Khan ka? Have you seen that movie? Yes or no, Farhan Qureshi, right? Pre-Rajulization, right? Okay, you remember that Three Idiots movie? Usme, do you remember that ragging wala scene? Right? When these are new students, they have just entered the college and the seniors are ragging. Right? Let me tell you what that scene was. Right? The scene was the entire hostel scenario was there, hostel scene was there, and then there were seniors, right? And then the seniors were ragging all the juniors who were coming in the hostel, right? And how they were ragging, right? They were saying, "Arey wow, 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 welcome, welcome, welcome," right? Chikna, 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 right? Kya kara lo, kya lagwa lo, apne body pe. What they were doing, they were stamping everybody's bodies, right? They were giving a stamp on everybody's body, right? And they were saying, "Thappa lagwa lo," right? Do you remember that scene, right? And सब लोग झुके हुए थे. Everybody was bending down and they were getting their stamped, right? Their bodies, they were getting stamped, right? That was the scene. Do you remember that scene? Okay. Now imagine the same scene, the same scenario. Instead of the seniors, okay, all the planets are standing. Okay. There is Surya Dev, there is Chandra Dev, there is Mercury, there is Venus. All of these people they are all our seniors. Huh? They are all standing. Okay. Is everybody able to visualize this? Right? They are all standing in a circle. And then in between the circle, you are born. Understood? The moment you are born, what these seniors are saying, are, welcome beta, aa gaye. Right? क्या करवा लो? ठप्पा लगवा लो, stamp लगवा लो. Now what is this stamp? Your astrology chart is your stamp. Is everybody understanding? This chart will stay with you for the rest of your life. The impact of this chart you will feel for the rest of your life. For your entire life. That thappa will not go. It is a permanent tattoo. Understood? Right? Acha. And by the way, we all face challenges in our life. Yes or no? Right? और कभी कभी challenges इतने बढ़ जाते हैं, it feels like ये सारे भगवान लोग हमारी ragging कर रहे हैं. Yes or no? How many of you agree? Raise your hand. Right? They are ragging us, no? Right? Sometimes sun is ragging us. Sometimes Mars is ragging us. Sometimes Venus is ragging us.
right? Venus means spouse, either husband or wife, right? They're always ragging us, no? Right? Okay. So that is what an astrology chart is. Have you understood? Right? Okay. This is what an astrology chart. It will stay with you for the rest of your life. Right? This thappa, this stamp, which the planets are giving you, right? It's like the moment you are born, no? Right? All the planets are like programming you, right? They are like programming your energies, okay? So that you continue a particular kind of a behavior throughout your life. And that is why every one of us is very unique. Have you understood this concept? Just type in IGA in the chat box. Go ahead. और ये जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, that is my thappa. This is my thappa. This Rashi Chakra is my thappa. Understood? Now one assignment is you have to create your thappa, your Rashi Chakra and send it to me from your Lagna chart. You have to look at the degrees. You have to create that thappa, right? You have to create your Rashi Chakra, Salsa Rashi Chakra, and you have to send it to me, right? Again, by tomorrow, 10 a.m., you have to send it to me. Okay, how many of you are going to send this to me? How many of you are super excited to create this for yourself? Right? Very good. See, I love excited students. And I believe excited students can learn astrology very fast. Okay. Okay. Now let us understand. So this is what is degrees. This is what is meant by degrees. Okay. Now let us understand conjunctions. Let us understand conjunctions. Okay. In Hindi, conjunctions is called as yuti. Okay. In Hindi, conjunction is called as yuti. Let us understand conjunction. Two or more planets within 15 degrees of each other. Okay. Then those planets are in yuti. Then those planets are in conjunctions. जब दो से ज्यादा प्लैनेट्स एक दूसरे के 15 डिग्री के अंदर आ जाएंगे, within 15 degrees of each other, then they are in conjunction. Okay. अभी conjunction मतलब क्या? आप में से कितने लोग स्कूल गए हैं? Have you gone to school? Very good. Have you sat on a school bench in your classroom? Yes. Now there was a person sitting next to you. Do you remember that person? Right? In my school, I was sitting beside a very beautiful girl I had a huge crush on. Okay. So मेरा मूड कैसे रहेगा स्कूल में जाते टाइम? Very excited and happy, no? Right? Okay. So that is युति. Means what? एक ही बेंच के ऊपर दो प्लैनेट बैठ गए, या sometimes तीन प्लैनेट बैठ जाते हैं. In some cases, 4 planets also sit together on one bench only. Right? कभी कभी क्या होता है? These planets like each other, then they are super excited for your life. Sometimes these planets who are sitting on the same bench, they don't like each other. Then they keep fighting between themselves. Understood? Right? So, 2 or more planets within 15 degrees of each other is called as conjunction. Let us look at my chart. Okay, and let us find which are the planets who are in conjunction. Do you think my Pluto and ascendant, are they in conjunction? Let me know. Do you think my Pluto and ascendant are in conjunction?
Pluto is at 9 degrees, ascendant is at 14 degrees. तो उनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 14 degrees minus 9 degrees, 5 degrees, which is less than 15 degrees. So yes, Pluto and my ascendant are in conjunction. वो एक ही बेंच पे बैठे हैं. ठीक है? Okay. Next, ascendant and Ketu. Can you check? Ascendant कितने डिग्री में है? 14 degrees. केतु कितने डिग्री में है? 25 degrees. So 25 minus 14 is how much? 11 degrees. This is also within 15 degrees. So ascendant and Ketu are also in conjunction. Understood? Okay, very good. Check again. Is Pluto and Ketu in conjunction? Check for Pluto and Ketu. Rupali ji is saying no. What about others? Chandramohan ji is saying no. Vidushi ji is saying no. No, they are not in conjunction. Right? Because Pluto is 9 degrees, Ketu is 25 degrees, difference is 16 degrees. Now here is a trick question. Many big astrologers will not pay attention to this. Right? But you are SALSA astrologers, you will pay attention. Do you think Ketu and Saturn are in conjunction? Ketu and Saturn. Do you think are they in conjunction? Rupali is saying no. Some of you are saying, Nikhil ji is saying yes, Anju ji is saying yes. Hey Bhagwan, कौन सा सही है? Right? इसकी हॉकी स्टिक दाएं को है, ये दाएं को शॉट मारेगी. लेकिन इसका पैर तो बाएं को है, ये बाएं को शॉट मारेगी. Right? Remember, check there. Okay. They are in conjunction. Let me show you how. How are they in conjunction? केतु की डिग्री कितनी है? 25 degrees. ठीक है? तो ये 25 degrees की लाइन. यहां से ये लाइन तक आने तक कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 minus 25. 30 minus 25 will become 5. And then after that, Saturn is at 3 degrees. So 1, 2, 3. Correct? So 5 plus 3 is how many? 8 degrees. Right? So Ketu and Saturn are at a difference of 8 degrees only, which is less than 15 degrees. So Ketu and Saturn in my life, in my chart, they are also in conjunction. वो भी एक ही bench पे बैठे हैं. Understood? Right? Okay. उनकी ताकत बढ़ जाती है. For example, Ketu is isolation. Saturn is isolation, Ketu is detachment. Right? तो ये अकेले रहने की जिद जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. Right? When you come to level 1, you will learn about all the planets. Level 1 में you will learn all the main planets. Level 2 में all the rest of the planets you will learn. Okay? But they are in conjunction. They are staying together. Okay? ठीक है. Saturn and Uranus. Do you think are they in Yuti? Saturn and Uranus? No, because Uranus is 24, Saturn is 3. So 21 degree difference. Very good, Anjuji. Very good, Kakali ji. Very good, Sudesh ji. Dr. Alka, Rupali. Wow, amazing. What about Uranus and Neptune? What about Uranus and Neptune? Are they also in conjunction? Rupali is saying yes, Anjuji is saying yes, Chandramohan ji is saying no, Supriya ji is saying no. Why? Because they are in different houses and different rashis, that's why. No, that is not the case. ये houses तो हमने बनाए हैं, भगवान ने थोड़ी बनाए houses को.
ये राशियों को हमने बनाए हैं, भगवान ने थोड़ी वो दीवारें खींची है, लाइंस खींची है स्काई में, राइट? सो चेक, यूरानस इज एट 24 डिग्री, राइट? सो 24 डिग्री से आगे इस लाइन तक जाने तक, ये 30 डिग्री की लाइन है, यहां तक कितना डिफरेंस होगा? 30 माइनस 24 कितना? 6 डिग्रीज। और फिर उसके आगे नेपच्यून इज देयर एट 9 डिग्रीज, है ना? तो 6 डिग्री प्लस 9 डिग्री कितना हो गया? क्या बात, 15 डिग्रीज डिफरेंस। सो यूरेनस और नेपच्यून भी एक ही बेंच पर बैठे हैं। अंडरस्टूड? ओके, एक्सीलेंट। नेपच्यून एंड जुपिटर, डू यू थिंक? नेपच्यून एंड जुपिटर, नो, दूर दूर तक नहीं, वी कैन सी, वी कैन विजुअली आल्सो सी, नो, राइट? जुपिटर एंड मून, व्हाट डू यू थिंक? आर दे इन कंजंक्शन और नॉट? Jupiter is at 19 degrees, Moon is at 11 degrees. No, they are not in conjunction. So what is the difference between these two? Angular difference कितना है Moon और Jupiter में? 22 degrees. Very good. यहाँ पे 11 plus यहाँ पे 11. Very nice. Amazing. Moon and Mercury, are they in conjunction? No. Very good. Mercury Venus? Yes. वो तो मतलब वो तो एकदम क्लास वाला रोमांस है वो तो। एक ही बेंच पे बैठे हैं, एकदम चिपक के बैठे हैं, राइट? और 6th हाउस में बैठे मतलब लास्ट बेंच पे बैठे हैं। राइट? वहां पे बैठ कर शैतानियां कर रहे हैं लोग, ये दोनों प्रिंस और प्रिंसेस बड़े नटखट हुए हैं वहां पे पीछे। अंडरस्टूड? ओके। व्हाट अबाउट वीनस एंड सन, आर दे इन कंजंक्शन? Venus is 14 degrees, Sun is 1 degree. Sudhir ji is saying yes for some reason, but no. Answer is no. Because 14 के आगे 16 डिग्री चलना पड़ेगा, फिर उसके आगे 1 डिग्री. So there is 17 degree difference between the two. Sun and Rahu? No. Very good. Rahu and Mars? Yes. Right? अभी राहु मतलब क्या है मालूम है? मैजिक. ठीक है, राइट? मार्स मतलब क्या है मालूम है? भाई, राइट? आई विल टीच यू दैट टुमारो आल्सो, ओके? राहु मतलब ड्रामा, ओके, राइट? तो मार्स इज भाई, राहु इज ड्रामा, दोनों बैठ गए एक बेंच के ऊपर। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज अ सिंपल एनालिसिस? भाई ड्रामा करेगा। राइट? गामा, ड्रामेबाज भाई। वेरी गुड, थैंक यू रूपाली, थैंक यू फॉर दैट एनालिसिस, वेरी गुड। राइट? Understood? Everybody is understanding, yes or no? Right? Okay. If you have understood this, type in IJ in the chat box. Okay. And Chetna ji and Sakshi ji, please note down the names who are typing so we know how many of them are active. All right. Excellent. Maza aa raha hai? Enjoying everybody? Right? This is what conjunctions is. Okay. You will get everything. Don't worry, Sudhir. Okay. अच्छा, क्या ऐसे हो सकता है मोर देन 2 planets आर इन कंजंक्शन? डेफिनेटली हो सकता है। कभी कभी 4 planets भी कंजंक्शन में आ सकते हैं, 5 planets भी कंजंक्शन में आते हैं कभी कभी। मतलब एक ही हाउस में या 2 हाउसेस में, लेकिन एकदम नजदीक नजदीक 15 डिग्री के अंदर में सारे प्लैनेट्स।
So assignment में you have to add. What do you have to add? You know, कि आपके चार्ट में कौन से planets conjunction में है. That is what you have to add and send it to me in your assignment. You have to tell me which are the planets in conjunction. All right. Next one. Let us understand combustion. इसको बोलते हैं अस्त. अस्त. Okay, now let me try to explain you this concept. What is अस्त? अगर मैं आप सब लोगों को एक एरोप्लेन में बिठाकर, एक स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर, I send you to the center of the sun. ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? Let me know in the chat box. Burnout. Okay. Bharta. Ash. Koila. Okay, very good. भूत. क्रांति जी, अमेजिंग. भूत बन जाएगा आपका. वेरी गुड. ठीक है. कॉन्शियसनेस भी नहीं बोला, सोल भी नहीं बोला, डायरेक्ट भूत. राइट. बीच वाली चीजें ही नहीं, डायरेक्ट एंड गेम डायरेक्ट. ओके, द एंड. ओके, करेक्ट. सेम थिंग if any physical planet, not imaginary planet, if any physical planet comes within 6 degrees of the sun, then that planet becomes ast. That planet becomes combust. उस planet का बन जाता है भरता. ओके. अभी मेरे चार्ट में देखो, सन को देखो, सन के नजदीक कौन से प्लैनेट्स है उसको देखो. क्या मेरे चार्ट में कोई भी प्लैनेट 6 डिग्रीज में आ रहा है? 6 डिग्रीज है, नहीं आ रहा है. ओके, इट्स नॉट कम. लेकिन अगर समझो ये मर्क्यूरी जो है ना, राइट, मर्क्यूरी अगर सन के नजदीक होता, सन इज 1 degree in the first राशि. Imagine if Mercury was 3 degrees in the first राशि, तो क्या हो जाता? तो Mercury would have become combust. Understood? Mercury would have become combust. ठीक है. अभी ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं मालूम है? अगर कोई भी प्लैनेट कंबस्ट होता है ना, तो उस प्लैनेट का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. राइट, दैट इज व्हाट इज सेड ट्रेडिशनली. और दैट प्लैनेट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू. Right, that is what is said traditionally. Right, but in my research I have found out that that is not the case. Okay, ऐसा कुछ नहीं होता है. Right, I will tell you why, and I will tell you with a very simple reason. Okay, how many of you were children? How many of you were kids? You were kids sometime? Yes or no? Okay, या ऐसे पूरे बड़े के बड़े आ गए बाहर? You were all were kids, no? Okay, wow, nice to know. Okay, ठीक है. क्या बचपन में आपका कोई खिलौना किसी ने तोड़ा है? Has anybody broken any of your toy or any of your book or any of your pen or anything? Anybody has broken? Okay, very good. मेरा ना, there was this Titanic का audio cassette. Okay, right. I am a musician also. I play guitar. I can compose songs. I write songs. I can compose them. Okay, more than 8 songs I have written and composed so far. Right. So
So music was very close to my heart. And one friend of mine, no, right, he broke that cassette. Okay, that friend broke my cassette, right? Okay. अभी आपका अगर खिलौना कोई तोड़ देगा, what is your immediate response? What will you tell that person? What do you think? What will you tell? Anger. ठीक है, very good. Anger आ जाएगा. फिर anger and sorrow. Go away, huh? Fight. Supriya ji will fight. Ravindra ji will complain. Okay. Acharya, you will go to your dad. Okay. To complain. Ah, Chandra Mohan ji has the right answer. Compensate. Right? But acha, Y1. Who is Y1? Slap. He will slap that fellow. Mars is at very strong. Huh? Direct slap. Okay. So, see, our regular response is what? तूने तोड़ के दिया है, तू भर के दे. That is common sense, no? You have broken my toy. You compensate now. How will you compensate? You give me the money, or you buy another cassette and another toy and give it to me. Right? Do anything, or you repair that toy, whatever you can do, but you give me that toy. Right? Everybody understood? The same thing happens with astrology also. Right? अभी हमारे planet को अस्त कौन कर रहा है? Who is breaking our planet? The sun is breaking our planet. तो अपने को भर के कौन देगा? Sun भर के देगा. Why are you worried? Understood? So if in your chart, if you find Mercury is Earth, don't be worried. आपको लगेगा हे भगवान मेरी बुद्धि भ्रष्ट है. Right? Nothing like that. Sun भी वहीं पे है ना? Yes or no? भर के कौन देगा? राजा भर के देगा. And sun is the biggest, sun is the strongest, sun is huge, sun has every capability. हाँ वो काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा because sun का behavior थोड़ा अलग है, but that is okay. You will get the results. No? Sun is going to give you the results. Is everybody understanding? Right? अगर say for example Venus अस्त हो गया, Venus is within 6 degrees of the sun, Venus is spouse. तो क्या इसका मतलब ऐसा होगा you will not get spouse at all? ऐसा कुछ नहीं है. You will still get a spouse. But हो सकता है that spouse is very, तड़क भड़क एकदम. Because sun is like that, no? Sun is fiery, no? You might get a fiery spouse, but you wanted a spouse, no? You will get a spouse. Are you understanding? क्योंकि वो दोस्त भी बोलेगा ना, चल ठीक है मैं भर के देता हूँ लेकिन मेरे हिसाब से भर के देता हूँ भाई तेरे को. Right? That is what the sun is doing. Sun will also give you the results, but उसके हिसाब से. Right? If you look at Albert Einstein's chart, right? उनके chart में you will see Mercury to be combust. Right? Can you imagine that? Albert Einstein, right? One of the most famous, scientists, right? Who is supposed to have very high intelligence, very high buddhi. उनके chart में Mercury is combust. Right? So who is giving the result? Sun is giving the result. Is everybody understanding? Right? Okay. So don't worry if you see any planet combust. In Astro Sage, you will see planet के आगे ऐसा inverted वाला arrow. ऐसा वाला arrow दिखेगा planet के आगे. But then don't trust Astro Sage on that. You have to check the degrees. Because Astro Sage is not checking the degrees. You have to check 6 degree wala rule. Understood? Okay, let me tell you one more history.
how many of you are interested in history of astrology? Right? Very way back, 10,000 years back. Okay, for example, okay, history of astrology, simple, regarding combustion. ये concept कैसे आया? When they were observing the skies, जब वो आकाश को देखते थे, जब भी कोई planet सन के पास आता था ना, तभी वो planet जो है ना गायब हो जाता था। क्यों गायब होता था? क्योंकि सन का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, राइट? तो सन के वो रेज में, सन के वो ऑरा में वो प्लैनेट दिखाई नहीं देता था, राइट? फिर हमारे एकदम पुराने ऋषि मुनियों को क्या लगता था? हे भगवान, राइट, सूर्य देवता, ये आपने क्या कर दिया? आपने शुक्र देवता को निगल लिया, राइट? अंडरस्टूड? देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबशन वाज बॉर्न, कि शुक्रदेव अस्त हो गए। अंडरस्टूड? फिर कुछ दिनों बाद क्या होता था? वो शुक्रदेव सूर्य के पीछे से इस साइड आते थे, राइट? और वो ऑरा के बाहर आने के बाद वापस प्रकट होते थे। फिर हमारे ऋषि मुनि क्या बोलते थे? हे सूर्य देवता, थैंक यू सो मच। अंडरस्टूड? आपने हमारे शुक्रदेव को वापस भेज दिया, आपका लाख लाख शुक्र है। अंडरस्टूड? राइट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अस, राइट? Interesting. How many of you find this interesting? Type in INT in the chat box. INT matlab interesting, all right? Astrology is super simple and astrology is super interesting. Okay. In my book, no, I have mentioned some, these kind of things also, right? A lot of historic things I have mentioned there. ये स्वामी है, राशि का स्वामी है, वो कैसे डिसाइड हुआ? दैट इज ऑल्सो देयर। उसका भी एक ऐसे सिंपल लॉजिक है, राइट? ये दशा है, दशाओं का सीक्वेंस कैसे आया? उसका भी एक सिंपल लॉजिक है। इट इज वेरी सिंपल, द लॉजिक्स आर वेरी सिंपल, राइट? एंड 10,000 साल पहले कुछ ज्यादा ही इनोवेटिव एंड ज्यादा ही इमेजिनेशन पावर था ना हमारे ऋषि मुनियों का। सो दे क्रिएटेड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, scientifically also these concepts work because sun ki gravity is so high, sun ka radiation power is so high that the other planets, their gravities fall very weak and they are not able to affect you that much, right? But that also 6 degrees. Okay, you have to remember the 6-degree rule. All right, okay. Chitna ji or Sakshi ji, how many people out of 40 are active? Can you give me a number? Okay, so that is combustion. ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है मालूम है? जुपिटर, सैटर्न एंड imaginary planets, right? You may say that they don't become combust. Okay, you may say that they don't become combust. Why? Because they are also huge planets, no? खैर राहु केतु ascendant, they are imaginary planets, right? तो उनका combustion का संबंध ही नहीं आता है, right? राहु केतु तो राजा को भी शेंडी लगा देंगे, right? That much power they have, correct? But Jupiter and Saturn, they are huge planets. They are physical planets, but they are huge, right? So even if they become combust, they cannot become fully combust. They are partially combust only, अगर वो combust होते हैं. All right? Okay. Excellent. So we have learned degrees, we have learned conjunction, we have learned combustion. Let us understand another way. By the way, ये combustion वाला जो point है ना, बाहर के astrologers, they will use it to scare you. राइट? हे भगवान, सुप्रिया जी, आपके चार्ट में तो बुध ग्रह अस्त हो गया, राइट? अभी बुध की पूजा कराओ,
है ना, उसका वो ये पहनो, जेमस्टोन पहनो, राइट, कम से कम 50,000 का खर्चा करो, राइट, जो अस्त हो गया था बुध वो जाग जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट, राइट? Behavior, okay, the moment you change your behavior, it is as good as, not as good as, it is 100 times better than doing a puja. All right, okay. गोचर मीन्स ट्रांजिट्स, मतलब एक्चुअली प्लैनेट जो अभी मूव कर रहे हैं ना उसको गोचर, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड एज गोचर. एंड इन लेवल 4 आई विल टीच यू हाउ टू एनालाइज गोचर्स एंड ऑल ऑफ दिस, राइट, ट्रांजिट्स. ठीक है, ऑलराइट. सो और एक कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत डराएंगे आपको, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेशन, वक्री, हिंदी में बोलते हैं वक्री. और आपके चार्ट में ना प्लैनेट के आगे ऐसा स्टार रहेगा, अगर स्टार रहेगा तो वो प्लैनेट वक्री है. ठीक है, और डराने वाले इतना डराएंगे आपको लगेगा कि आप बकरी हो जो अभी हलाल होने वाली. ओके, अंडरस्टूड. But retrogression is a very simple concept. Let me show you how. How many of you drive a car? Do you drive a car? Very good. How many of you don't drive a car, but you like to sit on the behind seat on the car? Someone else should drive, but you want to sit like a Raja. Okay, very good. जब आप कार में बैठे हो, कभी किसी ट्रक को ओवरटेक किया है? Have you overtaken a truck? किया है ना? Okay. When you are overtaking the truck, from your point of view, is the truck going forward or going backward? From your point of view, कार के अंदर से आपको क्या दिखेगा, वो ट्रक आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है जब आप ओवरटेक कर रहे हो? When you are overtaking, backward. इसका मतलब क्या? वो ट्रक हो गया वक्री. अंडरस्टूड? ठीक है, while you are overtaking the truck has become retrograde. Understood? Okay, and it is as simple as this. But is really the truck going backward? Reality में क्या हो रहा है? No, it is just going in one direction only, forward only it is going. है ना? लेकिन आपको ये लग रहा है कि the truck is going backward. It is your perception that the truck has become vakri. Okay? अच्छा. How many of you were born and brought up on the planet Earth? अरे सुदेश जी, all नहीं बोल सकते. You never know if there is an alien between us. You never know. Alright. Okay. अच्छा, Rupal is sure about herself. That is very good. Okay. ठीक है. So we were all born on Earth. Now, if during your janam, during your birth, if Earth was overtaking Saturn, understood? Then in your chart, Saturn will become Vakri. During your birth, agar Mercury was overtaking Earth, then also you will see Mercury as Vakri. There will be a star besides Mercury. Understood? If during your birth, Earth was overtaking Jupiter, because Jupiter is a slow moving planet, Earth is a fast moving planet. If
Earth was overtaking Jupiter, right? Then in your chart, you will see Jupiter as Vakri. Understood? Rahu Ketu are always Vakri. Okay? And the reason for that you will understand in level 2. Okay? Rahu Ketu are always Vakri. Speed of Saturn is also slower than the Earth. There are only two planets which are faster than the Earth, Mercury and Venus. Right? Okay. Which are the two planets which can never become Vakri? Can you think? Which are the two planets which never become Vakri? Correct. नहीं, Saturn can become Vakri. Earth can overtake Saturn, no? While you were getting born. That is possible. Sun and Moon never become Vakri. Why? क्योंकि मून तो अर्थ के साथ चिपका रहता है हमेशा. Yes or no? Right? Moon is always around the earth only. Right? So there is no point, no chance of earth overtaking moon anytime. And sun is fixed in the center. तो उधर भी overtaking का कोई point ही नहीं आता है. Understood? So sun and moon never become Vakri. Okay? In your chart. So can you check in your chart how many planets are Vakri? In my chart, no, including Rahu, Ketu, 8 planets are Vakri. 8. Okay? What about you? चेक करो कौन से प्लैनेट के आगे स्टार है. राहु केतु को इंक्लूड कर दो. ठीक है, इवन इफ राहु केतु के सामने स्टार नहीं होगा ना तो भी इंक्लूड कर देना. So what happens in Vakri is the intensity of the planet drastically increases in your life. The effect of the planet drastically increases in your life. Okay, that is the effect of Vakri. Okay. Ast mein the effect of the planet drastically decreases. Retrogression mein the effect of the planet drastically increases in your life. All right. Okay. अभी why it increases उसका भी एकदम simple logic है. Simple logic. Okay, we are learning logical method. SALSA method is a very logical method. Right. अभी for example, वो ट्रक को ओवरटेकिंग वाला वापस सीन आप ध्यान में लाना. जब आप ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो आपका ज्यादा ध्यान ट्रक के ऊपर भी जाएगा. यस और नो? नेचुरली. क्यों जाएगा? बिकॉज यू आर बिकमिंग मोर कॉशियस. कि अरे बाबा बाबा वी आर ओवरटेकिंग द ट्रक राइट नाउ. राइट? सो लेट अस बी कॉशियस. तो एक आंख ट्रक पे होगी हमेशा कि भाई वो अपनी जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो इधर बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. राइट? इज इट मेंटेनिंग इन इट्स ओन स्पीड और नॉट? कि हमने ट्रक को ओवरटेक करना चालू कर दिया, ट्रक ने भी एक्सीलरेटर दबा दिया, वो भी अभी जोर में आना, सो देयर इज नो ओवरटेकिंग एट ऑल. ऐसा हो रहा है क्या? राइट? इज द ड्राइवर ऑफ द ट्रक ड्राइविंग करेक्टली? इज ही ड्रंक और नॉट? सो मेनी थिंग्स वी थिंक, नो? राइट? तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, जो वक्री है उसके ऊपर अपना ध्यान ज्यादा जाता है. We are more conscious about those things. We are more cautious about those things. Right? We are focusing more on those things. Doesn't mean effect is ulta. वक्री मतलब उल्टा इफेक्ट कभी भी नहीं होता है. It is just increased effect. Understood? It because you are focusing more.
राइट? तो अगर आपके चार्ट में बहुत सारे प्लैनेट्स वक्री होंगे ना, तो यू आर लिविंग अ वेरी फुल फोकस्ड इंटेंस लाइफ. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Say for example, if you have more than 4 planets Vakri, including Rahu Ketu, life is intense, no? Right? You can imagine my life, 8 planets Vakri, right? I am focusing on all these planets: Uranus, Neptune, Pluto, Saturn, Mercury, Venus, Rahu, Ketu. I am just focusing, right? Sometimes they are teaching me a lesson, sometimes I am teaching them a lesson. Understood? But it's a super focused, intense life. तो जिनका ना 4 या 5 से ज्यादा है ना, ऐसे आप मोक्ष के नजदीक हो. Okay, you are very near to moksha, right? Because you are living such an intense life. No, God is also saying, बेटा, okay, हो गया अभी तुम्हारा, चलो, done. Okay. And if you have less than 4 planets Vakri, or less than 5 planets Vakri, you can say you are a very new soul. Okay, you are just here. Understood? Right? अभी इंटेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे जन्म लेते जाओगे ना, इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी. अब ओके, ये जन्म का कर्मा अगले जन्म में, अगले जन्म का कर्मा उसके अगले जन्म में, राइट? सब कर्मा जमा जमा कर करके एक जन्म आएगा व्हेन एवरीथिंग इज वक्री. अंडरस्टूड? ओके. More than 4 planets Vakri, you are near to moksha. Because you are living a very intense life. You are completing a lot of incomplete tasks. How many of you agree? You will have that feeling. You will have that feeling. You are completing a lot of incomplete tasks. Yes, a planet can be Ast and Vakri at the same time. Okay. Okay. All right. If you have understood so far degrees, conjunction, combustion, retrogression, we will go deeper in the higher levels also. But right now, if you have understood so much, if you are liking me, if you are liking our SALSA method, just put in IGA in the chat box. All right. You can say love you, sir, also. I don't mind. Okay. All right. Okay. ठीक है. Thank you, Praveen ji. Thank you so much. Only guys propose me, okay? All right. Okay. ठीक है. So that was the logical part of today's session. Now let us come to the emotional part of today's session. ठीक है? लेकिन वो इमोशंस समझने के लिए थोड़ा सा पहले लॉजिक समझना पड़ेगा, फिर immediately you will understand. So in the next 30 to 40 minutes, you are going to understand which are the people who are supportive to you. लेकिन आप उनके बारे में बुरा भला सोच रहे हैं. And which are the people who are actually non-supportive to you, but आप उनके प्यार किए जा रहे हैं. Understood? Everybody excited to uncover this fact of your life, right? Just type in excited in the chat box. Okay, just type in excited in the chat box, and go ahead, create 2 charts side by side. Okay, create 2 charts. All right, equal size charts. Create 2 charts side by side. And while we are creating these charts now, let me tell you a story also. Okay, please listen to my story as well, because the story is important. Then you will be able to connect it with my chart also. All right. So this is a true story, a real story of my life.
ओके, मुझे हो गया मामा की लड़की के साथ प्यार. I fell in love with my uncle's daughter. Okay, and then I proposed to her. Okay, this was a lot of years back, many years back. I proposed to her. Okay, she said yes. The moment she said yes, that was the best day of my life. Okay, I was very happy. Okay, I partied, I jumped up and down, I was dancing, right? And I was like, super, life is going to be awesome now. Okay, that was the thought process. ठीक है, अभी ये चीज मालूम पड़ गई मेरे मामा को, मतलब उसके पिताजी को. ठीक है, he came to know about this thing. एक छोटे कमरे में बुला ली एक बड़ी मीटिंग. Okay, how many of you been part of family meetings? Have you been part of those, dramatic family meetings? Okay. Can you hear me? Yes. अच्छा. Okay. सस्पेंस में डाल दिया. ओके, ठीक है. So I have to draw again now. Two charts I have to draw again. Okay. So I was telling you मामा की लड़की की story, right? So कहाँ तक सुनी आपने story? Let me know in the chat box, please. What was the last thing you heard? Proposal तक ही सुना. She said happy. I was partying. I was enjoying. अच्छा, यहाँ तक ही. Okay, okay, ठीक है. फिर उसके बाद ना, my mama came to know about this. Okay, my uncle came to know about this, right? And you know what? In a small room, he called up a big meeting. Right? How many of you been a part of those kind of family meetings? Full dramatic family meetings. Have you been a part of those kind of family meetings? Right? Where the relatives are also there, right? Okay. So, छोटे से रूम में मामा ने 25 लोगों को बुला लिया. Right? 25 people in one small room, okay? Right? Parents, mere parents, and then other cousins, other chachas, and everybody was there in that room. Okay? And then mama started insulting me left, right, and center in front of everybody. Okay? In everybody, he started bullying me. He started, "Tu kaun hai? Samajhta kya hai khud ko? How can you think of this?" Right? सब, हाँ सब. आई डोंट नो, मामा उसकी बहन के साथ, मतलब मेरे माँ के साथ कुछ दुश्मनी निकाल रहा था, क्या कर रहा था, आई हैव नो आइडिया. ओके, बट कोई तो दुश्मनी निकाल रहा था वो, राइट? एंड यू नो व्हाट, आई वाज स्मॉल, आई वाज लाइक 24 25, आई थिंक, आई स्टार्टेड क्राइंग, राइट? आई वाज सिटिंग इन अ चेयर, instead of responding anything, I started crying. Okay, then what happened, once I started crying, see, if you love someone, right, and then that person also has committed to you ki baba, I will be there with you no matter what happens, right? What do you expect? कि वो लड़की मेरे पास आएगी, मुझे बोलेगी, सुधीर टेंशन मत ले, we will make it happen, whatever the problem is, we will, you know overcome this challenge.
राइट? प्यार में ऐसे ही होता है, एक दूसरे का साथ देना होता है, यस और नो, राइट? एक दूसरे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, राइट, एक दूसरे का साथ देना होता है, दैट इज व्हाट प्यार इज. नाउ दिस गर्ल कम्स टू मी एंड देन शी टेल्स मी, ये मामा की लड़की, अरे सुधीर, why are you crying? See, you are a boy and you are crying. I am a girl, still I am not crying. Right? Forget it, no. Right? There are relationships which happen and then they break. तो ये एक अनदर ब्रेक है यार, खत्म करना, खत्म कर कहानी. I was shocked. Right? I was completely shocked. और अभी तक मैं बैठे बैठे रो रहा था, इसके बाद में अभी लेटे लेटे रोना चालू कर दिया. Okay, can you imagine this? Okay, now ये वाली story, that is the end of the story. Okay, right? Now ये वाली story को आप याद रखो while I am going to explain you some concepts. Okay, let me explain you some concepts. Okay, let us understand planets and their relationships. So sun stands for your father. Okay, sun stands for your father. Moon stands for your mother. Mercury stands for your uncles, cousins, aunts. Okay, that is Mercury. Venus for both men and women, right? Males and females. Venus stands for spouse. Okay, Venus stands for spouse. Mars is siblings. Okay, Mars is siblings. Jupiter are your advisors, gurus, teachers, and also your children. Okay, that is what Jupiter represents. Okay. Right. Saturn. Saturn is what? All your savers, servants, employees, colleagues, friends, right? Then lawyers, all of these, Saturn represents all of these. Okay. Rahu stands for your father's father. And Ketu stands for your mother's father. Okay. You may also write father's father and that family, or and their family. Okay. Mother's father and their family. Okay. You can write it that way also. Okay. All right. Uranus, Neptune, Pluto, we will learn in level 2. Okay. Uranus, Neptune, Pluto, we will learn in level 2. All right. Okay. Have you understood this much? Have you understood these relationships? Type in yes in the chat box. Let me know. Type in yes in the chat box. Okay, very good. Now, there are two kinds of charts. There are many kinds of charts, but right now we are interested in two kinds of charts. One chart is called as ascendant chart.
और लग्न चार्ट, ठीक है. Why it is called as ascendant chart? It is called as ascendant chart because ascendant is always in the first house. Okay. So quickly, please copy my chart again in your notebook. You need not write the degrees right now. Just write the planet positions and the rashis. We will not write the degrees right now. Just copy this right now. Very good, Chetna ji. Good to know. All right. I will write the Rashi numbers also. So in my first or seventh Rashi, eighth Rashi, ninth Rashi, 10th Rashi, 11th Rashi, 12th Rashi, 2, 3, 4, 9. What happened? Okay. 3, 4, 5, 9, 6. Okay. Has everybody copied this much? Yes. Okay. Very good. Thank you, Sureka ji, Krati ji, Shalu ji, for confirming. Okay. Anju ji, thank you so much. Okay. So this is ascendant chart. Why it is called as ascendant chart? Because ascendant is in the first house. That is why it is called as ascendant chart. Now from the ascendant chart, we can create moon chart. From the ascendant chart, we can create moon chart. Right? अभी देखो ascendant chart में ascendant in the first house. तो moon chart में क्या होगा? Who should come in the first house? Moon should come in the first house. Understood? Right? So let us do this. Moon कौन सी राशि में बैठा है? 11th राशि में बैठा. करेक्ट? तो हम क्या करेंगे? हम मून को लेंगे, उनकी राशि को भी लेंगे and we'll put it in the first house. ठीक है? So here I will write 11 and here I will write moon. अगर यहाँ पे मून के साथ में जुपिटर भी होते तो I would have written Jupiter also here. तो जितने भी प्लैनेट मून के साथ है वो आप लिख देना. मेरे केस में मून एक अकेले है, एक in that house. So I will write only moon here. Okay. So moon in the 11th राशि. अभी अगर इधर 11 नंबर आ गया तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? Remember the flower pattern. 12. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके. अभी यहाँ पे मून आ गए 11th राशि में, तो यहाँ पे देखो 12th राशि में, तो यहाँ पे कौन कौन आने चाहिए? इन द सेकेंड हाउस ऑफ द मून चार्ट. क्या बात है रूपाली जी, आचार्य शिव जी, सुरेखा जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट. So Mercury and Venus will come here because 12th राशि. प्लैनेट्स अपनी राशियों को नहीं छोड़ेंगे, है ना. फर्स्ट राशि में किसको लिखूं? करेक्ट, रासुमा. राइट, रासुमा. अगर रा के जगह सैटर्न होते तो सासुमा आ जाती थी. वहां पे अभी रासुमा आ गई है. राइट. ओके, ठीक है. देन
सेकंड राशि में कोई है क्या? कोई भी नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ खाली है, राइट। सेवेंथ राशि में कौन से 3 प्लैनेट हैं? 3 planets are there, correct. Ascendant, Pluto and Ketu. Ascendant, Pluto and Ketu, right? Okay. 8th राशि में कौन है? Uranus and Saturn. 9th राशि में कौन है? Neptune. And 10th राशि में कौन है? Jupiter, right? समझ गया सबको? कैसे मून चार्ट कैसे बनाना है असेंडेंट चार्ट से? टाइप इन IGA in the chat box. You can create any chart. Now you can create Jupiter chart also if you want. You can create Sun chart also if you want. Every chart has its own meanings. Right now I'm going to teach you these 2 charts. Okay. So here is the main point. Okay, very important point. Okay. Your ascendant chart, no? This is the reality of life. Ascendant chart tells us about the reality of life. Okay. Actual ghatanaएं, the real happening things, the facts of life, the figures of life, right? The actual things that are happening, that is seen from the ascendant chart. All right. Whereas moon chart is your perception of life. Moon chart is what? ये ऐसा आपको लगता है. Ascendant chart is ये ऐसा है. Now, how many of you agree? जब अपने को जो लगता है और जो एक्चुअली है, इसमें बड़ा गैप जब रहेगा, लाइफ की बैंड बजेगी. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस और नो? यस और नो? टेल मी. राइट? डू यू एग्री? दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ऑल आवर चैलेंजेस. हमें लगता कुछ और है और होता कुछ और है. वी परसीव समथिंग एल्स, बट समथिंग एल्स ओनली हैपेंस. That is the biggest challenge, no? All our challenges ka root cause is that only. How many of you think that is a deep thought? Type in deep in the chat box. Perception. Deep. Correct. Very true. Right? So our astrology will make us aware of our perception of life. That is a big thing. Right? और ये perception ही नहीं मालूम था मुझे. For 35 years of my life, I had no perception. Right? Or I had no idea what my perception is and what is my reality. Only after astrology came into my life, I started understanding these things. And by the way, nobody taught me like this. If you have taken Vedic classes, for example, I am sure, probability is that you have not been taught like this. Right? You have been taught only ये नीच है, ये उच्च है, ये ऐसा है, ये वैसा है, रटो. Right? But it is not like that. Astrology has very beautiful practical implications. Okay. Now I will tell you. Okay. वो मामा की लड़की की story याद रखना. Okay. Now is the time you have to remember that story. Okay. In every chart, in any kind of chart, okay, in every chart, okay, house numbers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 and 11
in any chart, house numbers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11. These are comfortable houses. Okay. Means what? ये आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएंगे. Right? You will get property, good health, right? Good money, happiness will be there, right? Energy will be there, right? So all good things about life, so many houses can give you. Comfortable houses. अभी बचे कौन से? House numbers कौन से बचे? 6, 8 and 12. These are uncomfortable learning houses. How many of you love learning? Then you have to love these houses. Okay. These are not dushta sthanas. Right? These are not dushthanas. Right? That is what is called traditionally. Right? These are learning houses. Your life's learning will come through these houses. You will become uncomfortable. Right? And then you will grow. That is what will happen through these houses only. Right? Okay. So now, let us see this. Okay. Everybody pay attention. Let us mark 6, 8, 12 in both these charts. Right? 6th house, 8th house and 12th house. कौन से देखो तो? House, not Rashis. House. Right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mark कर दिया. Right? Look at the screen, everybody. And this is 7th house, which is a comfortable house. This is 8th house. Mark कर दिया. 8th is also uncomfortable house, learning house. Right? Then 9, 10, 11, 12. This house. Correct? 6, 8 and 12. We have marked in the ascendant chart. Let us mark the same in the moon chart also. They will come at the same positions. Right? 6, 8 and 12. Has everybody marked these in your notebooks? Yes? Let me know. Yes? Prati ji, thank you. Confirming. Surekha ji, Vaivan. Rupali, Kakali ji. All right. Okay. I hope everybody has marked these down. Now, do you remember Mama Wali story? Can you see that story happening on the chart right now? Look at my moon chart. मेरा perception. मेरे मामा के बारे में uncle. Right? Mercury. मून चार्ट में देखो मर्क्यूरी किधर है, कंफर्टेबल हाउस और अनकंफर्टेबल हाउस मून चार्ट में है. मून चार्ट में इट इज कंफर्टेबल. राइट? मीन्स व्हाट? माय मामा वाज माय आइडल. राइट? माय मामा ने डिड सिविल इंजीनियरिंग, सो आई आल्सो डिड सिविल इंजीनियरिंग. राइट? My mama was a Maharashtra topper. I also wanted to become Maharashtra topper and I became also Maharashtra topper. That was my perception. Understood? Now come to reality of my life. Where is my mama in my reality? Comfortable or uncomfortable? 6th house. 6th house is what? Uncomfortable house. See how beautiful astrology is. सामने सामने दिखा दिया. अगर मुझे 24 साल का जब था तभी मालूम होती एस्ट्रोलॉजी, then I would have behaved in a different way, no?
Yes or no? Right? अच्छा, वीनस को देखो. Venus is your partner, Venus is your spouse, is your girlfriend, right? Your live-in relationship रहेगा तो that person is your Venus. जिस person के साथ भी आप अपना तन मन और धन तो आ ही जाता है, right? शेयर करते हो, that is your Venus, right? अभी मेरे मून चार्ट में देखो, Venus कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल मून चार्ट. My perception, my perception, comfortable. What was the reality of my life? My biggest learning of my life was given by my Mercury and my Venus. So beautiful astrology is, and so simple it is. Are you understanding? I actually know, I have had, 4 to 5 relationships so far. Okay. और मैंने क्या किया, right? मैंने क्या किया, हर एक के ना dates लिख कर रख दिए. ठीक है? And I tallied those dates with my bank account statements also. Understood? Whenever I was in a relationship, no, my account statement was going down and down and down and down and down. My relationship was making me uncomfortable. Understood? Financially also it was making me uncomfortable. But मेरा mind बड़ा happy था. Wow, relationship, yeah, I'm gonna be happy and all of that. Understood? और जो वो 2 रिलेशन के बीच में का गैप था ना, वहां पे भी अकाउंट स्टेटमेंट्स देखोगे ना, अकाउंट इज गोइंग अगेन, इट इज बिकमिंग हेल्दियर, आई एम मोर अवेयर, राइट? I am paying bills on time, taxes on time, money is flowing in. Is everybody understanding? See how beautiful astrology is. If you find astrology beautiful, type in beautiful in the chat box, right? Beautiful now. Another thing, interesting, very interesting. मेरे मून चार्ट में देखो जुपिटर कहाँ पे है. So my mind's perception about my own children or my own child or my own gurus or my own teachers, it is what? It is an uncomfortable perception, right? कि मेरा गुरु मुझे नुकसान ही पहुंचाएगा, right? But look at the reality of my life. Jupiter is in a comfortable house. So I have to listen to my guru. I have to actually pay attention to what my guru is saying. Before understanding all of this, I was just like, what guru, who guru? Tell me first, prove yourself to me now. I was cross-questioning that person. I was a completely different person before understanding astrology. But only understanding astrology has transformed me. Complete 180-degree transformation. Understood? All right. So now your assignment is, you have to check in your life. ठीक है? कि who are the people who are supportive to you actually, लेकिन आपका मन उनको गालियां दे रहा है. And who are the people who are actually non-supportive to you, लेकिन आप उनके पीछे भाग रहे हैं, जैसे मैं मर्क्यूरी और वीनस के पीछे भाग रहा था. Right? Did you enjoy today's session? Did you like it? Type in IGA in the chat box. Please submit your assignments before tomorrow 10 a.m. Okay, we are going to close for the day. Quickly, we will do a Q&A session with Sakshi ji. Sakshi ji and Chetna ji can handle the question and answers for today, right? Tomorrow, we are going to meet at the same time, 6:45 p.m. Again, we are going to meet. Tomorrow, I'm going to tell you 2 remedies. Okay, your behavioral remedies. I'm going to tell you how you are supposed to behave. Okay.
Jeevanji, Rahu ka also I have given you, right? Okay. And how many of you are feeling like, you are enjoying this? Astrology is simple. You would love to continue to learn with me. How many of you are getting that feeling? Let me know in the chat box. Okay. Thank you so much. So tomorrow after 8:30, I am going to share with you the entire syllabus. Okay. पूरे 6 levels में क्या क्या covered होगा, ठीक है? And the fees is also very affordable, right? To give you an example, my level 1 fee is only 540 rupees plus GST. Understood? It is as simple as that, right? The entire thing. April is my birth month. Okay. So I am going to give you an excellent offer as well tomorrow because it's April going on. So if you are really interested to keep learning, within 6 months, you can become an amazing astrologer. You can start practicing professionally also. If you want to become a teacher like Sakshi ji, Chetna ji, they are getting trained now. I am supporting you in that also. If you want to set up your career, right, marketing support and all of that, I'm supporting in that also, right? So see, our idea is to spread positivity in the entire world. That is our idea, right? और ये जो एस्ट्रोलॉजी का नाम बदनाम हुआ है ना, राइट, उसको हमें सुधारना है, राइट? दैट इज माय मिशन, right? And I want you to join that mission. It is as simple as that. All right. Okay. So I will see you all tomorrow. Please continue your session with Sakshi ji and Chetna ji. Maybe by 9:20 we all can close. All right. Over to you, Sakshi ji. Thank you, sir. So, hello everyone once again. So, hope you all enjoyed the session a lot. क्योंकि एक्साइटमेंट वैसे ही दिख रही थी एंड पॉजिटिविटी भी दिख रही थी हमारी क्लास में. सो प्लीज टाइप इन यस इफ यू रियली एंजॉयड द सेशन. या रविंदर जी, दैट्स ग्रेट. आपकी एक्साइटमेंट देख के हमें भी अच्छा लगता है. सो क्विकली लेट्स रिकॉल व्हाट ऑल वी डिड टुडे. सो So let us recall what all we did today. So first of all, we just learned how to prepare our Rashi chakra. Then we all learned about the degrees, the combustion, then conjunction, retrogression, and उसके बाद सर ने हमें बताया कि कैसे मतलब understanding about the planets and their relationships and understanding the comfortable and not uncomfortable planets, the houses. So it was all a lot. Yeah, so a lot of things were covered today. And please, अगर किसी को कोई भी questions, कोई भी queries हो तो हमें बताइए. उससे पहले आयशा जी हमारे साथ कुछ share करना चाहती हैं. आयशा जी, please आप unmute कीजिए. Hi, thank you everyone. Hi to Sakshi and hi to Chetna ji. Hi, Long Aisha, how time are after you? that Goa. I'm fine, I'm Yeah. fine. Just wanted to share, it's a very great journey and very great thing about this astrology. And I really learned a lot. And I've almost earned the money I invest in my like, the course, and more than double and triple in 3-4 months of the time. I think 5-6 months of time. I've just started 3-4 months back and getting good response, getting good thing. It's totally out of the world, I've felt. Oh, that's really great, Aisha ji. So I Aisha wish ji all थी हमारी. the students all the best. Applause. Great applause to Aisha ji. Thank you. Yes. And we hope that you आयशा will जी be हमारे सीनियर मोस्ट बैचेस में से हैं. Okay, thank you very much. Thank you, dear. All the best, Aisha. Yeah, you too, guys. You too. Thank you. Yeah, good to see everyone growing. After long time. So हम चाहेंगे हम आपको भी सबको वेलकम, या हम आप सबको भी वेलकम करेंगे अपने सालसा फैमिली में. एंड भी और बड़े और अच्छा करेंगे. एंड दे शुड डू गुड प्रोग्रेस इन देयर लाइफ एंड मतलब पॉजिटिविटी फैलाए भी एंड डू गुड इन देयर लाइफ. सो प्लीज. Thanks, dear. Thanks a lot. Thanks. Yeah, अगर किसी को I wish please you all the best to the newcomer, the new joining people, and you will learn so many scientific astrology here, guys. And it's my very very best. You are very fortunate. You're learning from Mr. Khollam, sir.
You guys are very, very lucky. Yes, what I said, you are really blessed with the best. Yeah. So please, अगर किसी को कोई queries या questions हो, please आप पूछ सकते हैं. सुप्रिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. Hello. Hello, ma'am. It was very interesting and learning today. Knowledgeable था, लेकिन मेरा वीडियो नहीं चल रहा था. बीच बीच में कुछ सुनाई नहीं दिया. बीच में मुझे कुछ फोन कॉल्स आए. तो मुझे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे क्या इसके? जी, अभी से रिकॉर्डिंग्स आपको इनफैक्ट आफ्टर द क्लास ही सेंड कर देते हैं. आप देख सकते हैं आराम से, रिकॉर्डिंग्स आपको होंगी. कल की भी आपने देखी होगी, आज की भी, वो सब साथ साथ में सेंड कर देंगे. तो आप एक बार देख सकते हैं. और उसके बाद जो assignment, और जो कल का जो होमवर्क था, जो असाइनमेंट था, वो भी मैं भेज सकती हूँ ना वापस? जी जी जरूर, आप प्लीज वो भेज दीजिए सर को. कल का आज का जो भी है, तो वो आप रिकॉर्डिंग्स एक बार देख के कर सकते हैं. इनकेस तब भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो हमें आप ग्रुप में पूछ सकते हैं. मैं चेतना जी वहीं पे, वी कैन ऑलवेज हेल्प यू. एनी ओके मैम. क्वेरीज आपको होंगी जो आज का भी आपका मिस हुआ, तो यू कैन ऑलवेज. या थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. Anybody else wants to ask? आप यहाँ देख सकते हो, और भी बहुत सारे हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं. शिव जी हैं यहाँ पर. शिव जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? शिव जी, कुछ कहना चाहेंगे आप अनम्यूट करके? जी नमस्कार. अपने खोलम सर की तो बात ही निराली है. इनसे सीखने से मतलब हर चीज का एक देखने का नजरिया जो है बदल जाता है. पहले से तो लगता था कि पता नहीं क्या है, ये ग्रहों का क्या सिस्टम, क्या है इनका, किस तरह से काम करते हैं, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं. लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो एक एक चीज जो है वो स्पष्ट हो गई. आखिर ऐसा होता क्यों था. जैसा आज सर ने बताया था, उसमें मरकरी और वीनस, जिसकी वजह से उनको लगता तो था कि ये उनके फेवर में है, लेकिन वास्तव में वो फेवर में नहीं थे. चंद्र कुंडली के हिसाब से लगता था कि उनके गुरु जो है उनके फेवर में नहीं, वास्तव में वो फेवर में ही है. उनका दिमाग ऐसा सोचता था कि उनके गुरु फेवर में नहीं. इसी तरह से हमारी भी कुंडली में ऐसा ही है. कई सारे ग्रह जो है 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, वो वास्तव में हमारे खिलाफ जा रहे हैं. उनसे संबंधित जो रिश्ते हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हमारा मन ऐसा सोचता है कि नहीं, वो हमारे पक्ष में है, हमारे लिए अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता वो नहीं है. और जो चंद्र कुंडली में आते हैं 6, 8, 12 में, वो हमारा मन सोचता है कि नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं, लेकिन वो सही में वैसा नहीं है, वो हमारे फेवर में होते हैं. तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है. अब जैसे ट्रेडिशनली हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था पहले कि ग्रहों की आपस में जो युति है वो कैसे होते. हम लोग तो यही जानते थे कि एक ही घर में होने के बाद ही ग्रहों में आपस में युति होती है, एक ही भाव में हो तो. लेकिन दो अलग अलग भाव में होने के बाद भी 15 डिग्री के अंदर रहने पे वो युति में होते हैं. उसी तरह से सूर्य से कम्बस्ट का जो है वो भी हम नहीं जानते थे इस तरह से, लेकिन ग्रह जब 6 डिग्री के अंदर आता है सूर्य के, तभी वो कम्बस्ट होता है. तो यहाँ पे आकर के जो छोटी छोटी बातें हैं जिनका बड़ा एक स्वरूप बन जाता है, वो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है. तो ये मैंने देखा और कोशिश कर रहा हूँ मैं भी सीखने की. देखता हूँ कहाँ तक जा पाता हूँ. आप बहुत अच्छा करेंगे. एंड यही ब्यूटी है. देखिए सर ने जो आज चीजें हमें बताई, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड इज सो लॉजिकल ऑल्सो. अगर आप देखें इसको, तो छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं जो सर हमें बताते रहते हैं. तो आप बहुत अच्छा करेंगे शिव जी इसमें. विश यू ऑल द बेस्ट. जी धन्यवाद. और कोई कुछ कहना चाहेगा? 2 दिन की जर्नी हो गई है हमारी फाउंडेशन लेवल कोर्स की. कोई कुछ कहना चाहेगा, कुछ पूछना है? हाँ जी सुप्रिया जी. हेलो मैम. मुझे लगा था कि एस्ट्रोलॉजी मतलब इतने सारे नंबर्स रहते हैं, वो इतना स्टार्स है यहाँ पे, प्लैनेट्स है, ये कैसे याद रखना है, कैसे करना है, मुझे मैं करूंगी कि नहीं, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ. अभी भी थोड़ा मुझे मतलब आई कैन, मैं रिकॉर्डिंग्स देख के मैं सीख लूंगी, थोड़ा थोड़ा रिकलेक्ट करूंगी, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. अभी मैं सीख सकती हूँ,
आगे जा सकती हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी पॉजिटिवनेस है। प्रिया जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि सर हमें ना एक बहुत अच्छा चांस देते हैं कि आप इनकी कोई भी सेक्शन, लेवल 1 का कोई भी क्लास या कोई भी लेवल, आपका फाउंडेशन लेवल या कोई भी लेवल की कोई भी क्लास, वो जितनी बार लगाते हैं आप उतनी बार उसको अटेंड कर सकते हैं। ये जो बेनिफिट है ये आपको और कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ सर के साथ आपको मिलेगा। अगर बाय चांस, जैसे आपने बोला आज इंटरप्शन बहुत ज्यादा थी, नेक्स्ट टाइम आप ज्वाइन करने के बाद सर को, नेक्स्ट टाइम जब भी फाउंडेशन लेवल का कोर्स होता है तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, ताकि वो आपका जो डाउट है, एक तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ आपको दोबारा से फाउंडेशन लेवल करने के चांस भी मिल जाएंगे। तो ये सर के कोर्स की बहुत अच्छी खासियत है। एंड एक चीज और कहना चाहूंगी सुप्रिया जी, मैंने भी जैसे अपना इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि जैसे आप कह रही हैं ना कि अभी कुछ मैं कर पाऊंगी एस्ट्रोलॉजी या नहीं कर पाऊंगी एस्ट्रोलॉजी, तो ये क्वेश्चंस मेरे भी माइंड में थे जब मैं आपके यहाँ आपकी तरह यहाँ बैठी हुई थी। बट ट्रस्ट मी सर इतने इजी और सिंपल वे से करते हैं, और चाहे जितनी मर्जी आपने पूछना हो उनसे कर, वो कभी भी नहीं, हर बार आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, हर बार आपको नए फिर से क्लासेस रिपीट करने के मौके मिलेंगे। तो जैसे आप सोचती हैं ना, मैं भी सोचती थी। अब आप देखिए कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप अपने आप में देखेंगे कि सर की आप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कर लेंगे ना, आपको लगेगा कि आपकी सारी जो डाउट्स और वो सब कुछ क्लियर है। सो ट्रस्ट मी फॉर दिस, यू कैन डू इट वेरी वेल। या और किसी को कुछ पूछना है? और सबसे बड़ी बात है कि मैम वो जी, सबसे बड़ी बात है कि जो असाइनमेंट मिलता है वो आप टाइम टू टाइम करते रहें तो आपको काफी सहूलियत मिल जाएगी अपने बारे में जानने के लिए। सर तो अपने चार्ट से समझाते ही हैं, लेकिन हम यदि असाइनमेंट को करते रहें तो उससे काफी सहूलियत हो जाती है। And I want to add here one thing. I am also in level 2 now. तो अभी बहुत जल्दी ही मैं इतना समझ गई हूँ कि कुछ चीजें जो वैदिक में या वैसे हमारे किताबें पढ़ने से हम और कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे क्योंकि हर चीज का लॉजिक है और वो इतनी सिंपल तरीके से सर बताते हैं कि अभी से इतना कॉन्फिडेंट आना शुरू हो गया है विद इन 1 और 2 लेवल्स में, कि ऐसे लग रहा है कि अरे ये तो ठीक है, हम गलत कर रहे थे अभी तक। लॉजिकली पता चलती है जब चीजें, जब हमें ये पता होता है कि 1 और 1 2 क्यों है, तब हम उसको याद रख पाते हैं हमेशा। वो वाली चीज मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। सुनीता जी की क्लास में तो मैं होती हूँ और मैं देखती हूँ उनकी कि क्या गजब ये प्रेडिक्शन कर रही होती हैं सर के बारे में, या किसी और जो भी सर एग्जाम्पल ले रहे होते हैं, तो उनके बारे में जब भी सर कुछ पूछते हैं तो इनके बहुत सारे मतलब आंसर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज अमेजिंग। तो ये And that is because of sir only. Whatever I learned, that is from sir only. And सर के लॉजिक्स और सिंप्लिसिटी की वजह से ये सीख पाए, क्योंकि इस एज में वैसे ही सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम इतने रिजिड और स्टबर्न हो जाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन जब लॉजिक पता चलता है देन वी रियलाइज कि यस, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, मींस दिस इज करेक्ट। और वो दिख रहा है, वो अभी से दिख रहा है। तो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बहुत जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो चीजें हम मिसकॉन्सेप्ट्स हैं हमारे दिमाग में कई चीजों के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए या किसी चीज के लिए, वो पहले 2-3 क्लास में एकदम से उड़नछू हो जाएंगे और हम एकदम लॉजिकली बात करेंगे। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि ठीक है राहु है तो खराब ही होगा, राहु बहुत अच्छा भी होता है, वो क्यों होता है ये सर बताते हैं कितनी बारी। और राहु केतु दोनों खराब नहीं होते। कुछ ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो लॉजिक से क्योंकि पढ़ी है मैंने, तो मेरे दिमाग से हवा निकल गया कि अरे ये राहु का था या केतु का था। तो इस चीज को अगर हम लॉजिकली सीखते हैं तभी समझ में आएगा, और मेरे को भी तभी समझ में आ रहा है। मैं तो खुद मेरी जर्नी आप लोगों के साथ कल शेयर की कि सर को ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजी कई लोगों से सीखने की कोशिश की, मैं नहीं सीख पाई। जितना सिंपल कॉन्सेप्ट, जितना इजी कॉन्सेप्ट सर ने बताया, नोबडी, किसी ने नहीं। वो जो होता है कि आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस निकल रहे हैं बाहर, उनको शांत करना, वो चीज आपके हर चीज का लॉजिकली आंसर देना, दैट सर कैन डू। यस, और सर की एक खासियत है कि हम चाहे जितने बुद्धुओं वाले क्वेश्चन पूछें,
वो जवाब जरूर देते हैं और हमें लॉजिक समझा देते हैं उसके पीछे। तो हम सेटिस्फेक्शन फॉर लर्निंग इज मस्ट, और वो हमें यही मिलता है। मैंने कई जगह से बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलता। दिस मच आई कैन से। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं बिल्कुल सुनीता जी के साथ अग्री करती हूँ। मैं भी इनके साथ लेवल 2 कर रही हूँ, और आई वाज आल्सो अ न्यू टू एस्ट्रोलॉजी। आई डिडंट नो इवन मुझे ए भी एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं मालूम था। जैसे सर ने बताया कि नास्तिक से आस्तिक वाला जो सफर है, आई हैव डन दैट। आई मीन इट्स रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि फाउंडेशन लेवल से, और आई कांट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल क्लास। कितने भी फाउंडेशन लेवल हो, कुछ भी हो, मैं सारे की सारी क्लासेस सर के अटेंड करती हूँ। एवरी टाइम आई मीन समथिंग न्यू, समथिंग अमेजिंग। सुरेखा जी, ये तो आपको पता ही होगा कि हर क्लास में, हम तो अब इतने बैचेस करके हम तब भी लेवल 1 लेवल 2 सर का ये देखते हैं कि बिल्कुल हर बिल्कुल क्लास में सर बिल्कुल। कुछ नया और देते ही सर होते इतना हैं हाँ एवरी जी, टाइम। या इतने इजी कॉन्सेप्ट सर ने मतलब बनाए हैं, जिन्हें कि मतलब सिर्फ याद ऐसे मगअप नहीं करना है, यू नो, जस्ट में रियलिटी है वो चीज याद रहती है, एंड यू डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। हाँ बिल्कुल, जहाँ लॉजिक आ जाता है वहाँ रटने की जरूरत ही नहीं रहती। बिल्कुल 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 सुनीता जी, या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, इज सो नाइस। थैंक यू फॉर Thank you शेयरिंग। everyone. Thank you everyone for sharing your experience with sir. And I hope जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सीखने को मिला होगा आज इन लोगों के एक्सपीरियंस से भी, और सर ने जो पढ़ाया उससे भी। एंड होप हम आप लोगों को कल फिर यहाँ पर देखेंगे सबको, एंड आगे के सफर में भी आप हमारे साथ रहेंगे, ये भी आशा है हमारी। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो। सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। Good night all. थैंक यू मैम।